So let's see the patterns of the fever. Sustained or continuous. Persistent rise in temperature. So this is the normal body temperature, but there is persistent rise in temperature with a minimal of less than 1 degree Celsius. Causes are pneumonia, meningitis, UTI and brucella. Now intermittent. There is exaggeration of the normal circadian rhythm. So normal circadian rhythm is this. There is exaggeration of this normal circadian rhythm seen in deep-seated infections, abscess, kala-azar, malignancy and drug fever. Now relapsing. Febrile episodes are separated by intervals of normal temperature. So normal temperature, then fever, normal temperature, then fever, seen in case of malaria, borrelia, tuberculosis and lymphoma. If this occurs daily, it's known as quotidian fever, seen in case of Plasmodium falciparum. A double quotidian fever occurs when there are two spikes of fever every day, generally once in the morning and once in the evening, seen in case of miliary tuberculosis. Every 48 hours पे जो spike आती है, that's tertian fever, seen in case of falciparum, vivax and ovale, and in every 72 hours the quotidian fever seen in Plasmodium malaria. So now step ladder fever, a type of sustained fever where the temperature rises gradually to higher level in with every spike. So there would be increase in temperature. So this is known as step ladder fever, seen in case of typhoid and typhus. Remittent, the temperature spikes falls daily with diurnal variation of more than 2 degree. So it's like same as of continuous, but इसमें 2 डिग्री से ज़्यादा का वेरिएशन होगा. इट्स मोर देन 2 डिग्री Celsius, seen in tuberculosis, infective endocarditis and many viral and bacterial infections. इनवर्स फीवर क्या होता है? जर्नली हमारे पास लो लेवल होता है मॉर्निंग में एंड हाई लेवल होता है. लो लेवल मॉर्निंग में होता है, हाई लेवल इवनिंग में होता है. बट इसमें उल्टा होता है, मॉर्निंग में ज़्यादा हो जाता है, इवनिंग में कम हो जाता है. सीन इन केसेस ऑफ मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस. एंड नाइट स्वेट्स सीन इन tuberculosis, leukemia, lymphoma and autoimmune disorders. So now last one is temperature pulse disparity. This is a counterintuitive response of the slower pulse associated with higher fever. So normally क्या होता है कि pulse भी high हो जाती है as the fever is high, but यहाँ पे the pulse is slow and fever is high, seen in cases of typhoid fever. So let's revise the patterns of fever. First one is continuous and sustained, जिसमें normal range से ऊपर रहेगा but less than 1 degree का variation होगा. Intermittent में exaggeration of normal circadian rhythm होती है. Relapsing में normal भी होगा बढ़ेगा भी, normal भी होगा बढ़ेगा भी. एंड क्यूटीडियन जो डेली अकर होता है, डबल क्यूटीडियन जो एक बार मॉर्निंग और एक बार इवनिंग में होगा, एवरी 48 आवर्स एंड एवरी 72 आवर्स. स्टेप लैडर फीवर सीन इन केसेस ऑफ टाइफॉइड एंड टाइफस. रेमिटेंट कॉन्टिन्यूस और सस्टेन टाइप का ही है, बट इसमें मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन होता है. सो दिस इज द रेमिटेंट. इनवर्स मॉर्निंग में ज़्यादा होगा, इवनिंग में कम होगा. एंड नाइट स्वेट सीन इन केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स. टेम्परेचर पल्स डिस्पैरिटी क्या होती है? स्लोअर पल्स विद हाई फीवर.